Hello everyone, welcome to MBA Karo. So the last week has been quite eventful for MBA aspirants, and one after other you have notifications coming up. तो कुछ दिन पहले कैट का नोटिफिकेशन आया था. आज से फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है. Some of you might have already filled the form also, and NMAT notification also came recently, and NMAT forms also started, right? And today Snap notification is also out, and the forms of Snap have also started, right? So multiple notifications coming up. So it is the time that you start taking these exams seriously. Okay, so in this video we will discuss that the Snap details. ठीक है, क्या पैटर्न रहता है और कैसे कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू हेयर हैव टेकन स्नैप इन द पास्ट? कितने लोग ऐसे हैं जिनने स्नैप लास्ट ईयर दिया हुआ है और लास्ट ईयर या उससे पहले दिया है, या कितने लोग नए देने वाले हैं स्नैप? बिकॉज अभी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने स्नैप के बारे में ज़्यादा सुना नहीं होगा, क्योंकि अभी कैट कैट की लोग प्रिपरेशन करते हैं और बाद में आके ऐसा लगता है कि हाँ चलो स्नैप की भी प्रिपरेशन करते हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल गिव यू लाइक अबाउट स्नैप, व्हाट इज स्नैप, और उसके साथ कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, एटसेट्रा. So these are the dates: December 6, December 14 and December 20. So तीन टेस्ट होते हैं. They take best of three. ठीक है, तो आपका जो बेस्ट स्कोर होता है वो कंसिडर किया जाता है. देर इज नो नॉर्मलाइजेशन. ओके, सो वन ऑफ द एग्जामिनेशन विच इज अगेन अ वेरी ट्रिकी थिंग कि कौन सा एग्जाम देना चाहिए. वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. सो लाइक राइट आफ्टर कैट, ठीक है, कैट आपका जो है वो आपका 30 नवंबर को है. सो दैट इज ऑन अ संडे. फिर उसके बाद आपके पास सिर्फ 6 दिन का टाइम है. तो अगर आप स्नैप की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक हफ्ते में सारा कुछ कवर नहीं कर पाओगे, राइट? सो स्नैप की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो थोड़ा पहले से स्टार्ट करनी पड़ेगी, एंड बी कंटिन्यूअस टुवर्ड्स इट्स प्रिपरेशन. हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें टॉपिक्स आते हैं, राइट? इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. Now these are the important dates about the examination. ठीक है, रजिस्ट्रेशन 20 नवंबर तक है. तो कई लोग ऐसा होगा अभी जो स्नैप नहीं दे रहे होंगे, अभी कई लोग होंगे जिनको स्नैप के बारे में पता भी नहीं होगा. कभी कई लोग इसको अंडरमाइन कर रहे होंगे. बट जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, कैट नजदीक आता जाएगा, यू विल रियलाइज कि अच्छा ये एग्जाम भी भर लेता है. ठीक है, सो दे हैव फॉर्म फिलिंग डेट टिल November 20. नाउ लेट अस से इफ योर प्रिपरेशन इज वेरी गुड फॉर कैट, now you must understand कि स्नैप के लिए थोड़ा अलग प्रिपरेशन लगती है, थोड़ा अलग टॉपिक्स आते हैं, स्पीड बेस्ड टेस्ट होता है, राइट? सो लेट अस से if at this point in time you are focusing on cat, yes you can focus on cat. बट अगर आपको जैसे टूवर्ड्स द एंड लग रहा है कि आपका कैट अच्छा नहीं जा सकता है या कोई भी रीजन से, तो आप एक स्नैप एक ऐसा बैकअप एग्जाम ले सकते हो. इसके थ्रू कई कॉलेजेस होते हैं. एंड अनदर गुड पार्ट ऑफ दिस टेस्ट इज, देखो एग्जाम में पैसे लगते हैं, ये आप डिनाई नहीं कर सकते. ठीक है, आपका 3 फॉर्म अलग होंगे, फिर कॉलेजेस के फॉर्म अलग होते हैं. सो एमबीए इज नॉट समथिंग लाइक वेयर यू डू नॉट हैव टू शेड मनी. ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे बहुत सारे फॉर्म में खर्च होते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू एक्सेप्ट, राइट? बाद में आप किसी भी कॉलेज में आओगे, फीस भी भरनी पड़ती है. सो पैसे आपको रखने पड़ते हैं. ओके, द थिंग इज, द गुड थिंग अबाउट दिस एग्जामिनेशन इज 3 अटेम्प्ट होते हैं, तो बेस्ट ऑफ 3 आपका जाता है. अब और एग्जाम में से आपने कैट दिया, राइट? आपका कैट एक दिन का एग्जाम था, खराब हो गया. बट स्नैप में अच्छा है कि आप एक टेस्ट अच्छा कर दो, बहुत अच्छा चला जाए तो आप डिसेंट कॉलेज पा सकते हो. देन सेकंड थिंग इज, स्नैप के कॉलेजेस जो होते हैं वो एकेडमिक्स और अदर चीजों पे उतना फोकस नहीं करते हैं, राइट? सो यहाँ पे आप हाई स्कोर ले आओ, यू विल गेट इंटरव्यू कॉल. कैट यू डू नॉट हैव अ गारंटी ऑफ गेटिंग अ कॉल इवन एट अ वेरी हाई परसेंटाइल. सो स्नैप इज एन एडवांटेज, एंड बिकॉज ऑफ दीज 3 टेस्ट थिंग, बिकॉज लेट अस से अगर आपका एक टेस्ट अच्छा नहीं जाता, सेकंड में आप इंप्रूव कर लेते हो, so that is a good thing. Okay, so the test fee is 2250 per test. Okay, so 6750 if you write all three, and 1000 per college. So जो जो कॉलेज में आप अप्लाई करते हो तो वो आपको 1000 पर कॉलेज देना पड़ता है. अभी के लिए आप ऐसा कर सकते हो, खाली स्नैप फिल कर सकते हो, मॉक टेस्ट दो, थोड़ा अपनी परफॉर्मेंस मेजर करोगे, आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, देन यू कैन गेट दैट लाइक विच ऑल कॉलेजेस यू शुड अप्लाई, बिकॉज उसके कॉलेजेस के फॉर्म बाद तक चलते रहते हैं. ओके, नाउ द पैटर्न,
ठीक है, पैटर्न किस तरह का रहता है, इट्स अ स्पीड बेस्ड टेस्ट, यू हैव 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स। तो अगर आप कैट देखते हो, कैट में है 68 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स, तो आपको डबल पेस से करना पड़ता है, लाइक 1 क्वेश्चन पर मिनट। ओके, नाउ ऑफ कोर्स द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, लेवल इज इजियर एज कंपेयर टू कैट, डेफिनेटली, राइट। अगर आप 60 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हो और 60 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपका लेवल कम रहता है, राइट। नाउ इन दिस दे मेंशन जनरल इंग्लिश, इन दिस दे डू नॉट हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो मेंशन करे रहते हैं। वर्बल एबिलिटी के 15 क्वेश्चंस होते हैं। अनदर एडवांटेज, लाइक इफ यू आर गुड एट क्वांट एंड एलआर, ठीक है, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, राइट, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, नो सेक्शनल कट ऑफ, नो सेक्शनल टाइमिंग ऑल्सो। सो ये भी एक एडवांटेज रहता है इस एग्जाम को देने का, कि क्यों देना चाहिए। मान लो आपकी क्वांट और रीजनिंग अच्छी है, वर्बल उतनी अच्छी नहीं है, आप वर्बल की वजह से कैट में अटक सकते हो, बट यहाँ पे आप क्वांट और रीजनिंग में 45 क्वेश्चंस होते हैं, आप उसमें से लेट्स से अराउंड 35 प्लस करेक्ट कर लिए और बाकी आपने वर्बल में खींच लिए, सो यू कैन गेट अ डिसेंट स्कोर। सो देर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, नो सेक्शनल टाइमिंग, सो यू कैन अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट द पेपर। सो दैट इज वन गुड थिंग अबाउट दिस टेस्ट। ओके, सो इसका सिलेबस का भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे डिटेल्स में होगा कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। क्वांट जो होती है, क्वांट अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आपने कैट कर लिया है, ठीक है, कैट की प्रिपरेशन कर लिया, तो क्वांट ऑलरेडी कवर हो जाती है, ठीक है। तो क्वांट के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको एडिशनल एलआर टॉपिक्स कवर करने होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल आपको जैसे क्रिटिकल रीजनिंग करनी होगी, ठीक है, उसके अलावा क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। सो वी हैव ऑल दीज कंटेंट अवेलेबल ऑन आवर चैनल आल्सो, ठीक है, जिसमें हम सारे टॉपिक मोस्टली हमने कवर करा है। क्लॉक कैलेंडर्स हो गया, सिलॉजिज्म्स हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, डायरेक्शंस। सो देयर आर सेवरल अदर टॉपिक्स which are need to be covered beyond cat। तो अगर आप कैट का डीआईएलआर करके जा रहे हो, सोचोगे स्नैप में हेल्प मिलेगी, नहीं होगी। स्नैप में छोटे छोटे इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो दैट इज अ सेपरेट थिंग इन स्नैप। And if you talk about English, there is no LR, there is no reading comprehension. Apart from that, you have miscellaneous topics like direct, indirect speech, right? Grammar. Then you have idioms and phrases. So there are several topics which are tested in Snap. Okay, but नॉट प्रेजेंट इन अदर एग्जाम्स, तो आपको इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द टाइमिंग, 60 मिनट्स होते हैं, और आपको नेगेटिव मार्किंग रहती है 25%, सो +1 फॉर करेक्ट आंसर एंड -0.25 फॉर इनकरेक्ट आंसर। ओके, अब इसमें एक जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि जो आप 3 टेस्ट तो दे सकते हो, बट देर इज नो नॉर्मलाइजेशन, दैट इज वन ड्रॉबैक ऑफ दिस एग्जाम, ठीक है। तो हर एग्जाम के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। प्रोज ये है कि कंपैरेटिवली इजी एग्जाम होता है, ऑफ कोर्स आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, कंपटीशन टफ होता है, नॉट दैट कि कंपटीशन इजी होता है, कंपटीशन टफ होता है, लेवल इजी रहता है, प्रैक्टिस से आप इसमें अच्छा कर सकते हो। टॉपिक्स आर नॉट वेरी लेंथी, ठीक है। टॉपिक्स ऐसे जैसे रीजनिंग के टॉपिक्स आपको ऐसा नहीं कि एल आर डी आई वाले जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं या लॉजिक इंटेंसिव, वैसे नहीं रहते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट 3 चांस मिलते हैं, राइट। पास्ट एकेडमिक्स ये सब नहीं देखते हैं, तो देर आर सर्टेन एडवांटेजेस, बट एट द सेम टाइम द डिसएडवांटेज इज नो नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो हो सकता है आपने तीनों टेस्ट नहीं दिए, आपने एक ही टेस्ट दिया और वो टेस्ट पेपर डिफिकल्ट आ गया और कंपैरेटिवली दूसरा टेस्ट इजी आ गया, सो दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन। नाउ विच स्नैप टेस्ट टू टेक, राइट। सो ये काफी लोगों का क्वेश्चन होता है, फर्स्ट वाला देना चाहिए, सेकंड वाला देना चाहिए, थर्ड वाला देना चाहिए। नाउ आई विल गिव यू सम डेटा, लाइक इन ऑल्दो like it may vary for person to person, right? So like for the past 3 years I'll show you the trend, and see, I am one of the best test takers of snap, having scored 99.97 plus in the last 3 attempts, so I understand the exam very well. So like probably no one in the industry would be understanding this exam to this extent कि कौन से एग्जैक्ट कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या लेवल रहता है एंड ऑल। सो लाइक दिस वाज माय 2022 स्कोर कार्ड, एंड इफ यू नोटिस दैट like my highest score was in test 1, okay, and test 2 और 3 में
स्कोर कम हो गए. नाउ verbal thing is like like if you talk about verbal thing, uh, the verbal thing keeps varying, right? It's a very subjective thing, काफी knowledge based चीजें होती है, right? But अगर हम बात करें कि जो quant का part है, like quant is something which you can say that like this is the factor which I believe कि quant काफी uh, like deciding factor होता है, and especially like since I am great at quant, so I can say that like quant is which will decide. So if you see first test में quant easy थी, right? And other two tests, it was on the moderate to difficult side. And even third test, if you're saying the scores are dipped a bit, right? So you can see that like तीसरा जो दूसरा और तीसरा टेस्ट आया था वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था in terms of quant. And other sections also if you see like English as I said that काफी knowledge based होता है, आपको कोई particular idiom आता है कोई नहीं आता, but other sections में आप like अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हो. सो एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग आर ऑन सिमिलर लाइंस. Okay, so like my highest score was on test 1. So if you talk about the other aspirants also, it's not just about me. In 2022 test 1 was the easiest one and the other two tests were on the difficult side. Okay, अब बात करें 2023 में क्या हुआ था. 2023 में like again I scored 99.98 in this. Although I scored the highest in test 1, but जो test 2 का quant थी it was easy, right? काफी easy quant आई थी. और जो slot 2 था, जो test 2 था, उसमें सारे high scores slot 2 में गए थे because of the easy quant. क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश में आपको उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लॉजिकल रीजनिंग में भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम लगता है, बट क्वांट इज द डिसाइडिंग फैक्टर. अब जिस भी पेपर में क्वांट इजी आ जाएगी उसमें स्कोर आपका ज्यादा चले जाएगा. ओके, सो इन 2023 सेकेंड स्लॉट वाज द इजीएस्ट वन. इसमें लोगों ने बहुत ज्यादा स्कोर किया था. ऑल्दो आई मैनेज टू स्कोर वेल इन द फर्स्ट टेस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, क्योंकि काफी डिफरेंस आ गया था इंग्लिश स्कोर में. But most of the aspirants scored better in the second test. So it is a gamble. You do not know which test is going to be the easy one. अब लास्ट ईयर क्या होता है, लास्ट ईयर भी सेकंड फर्स्ट और सेकंड स्लॉट ठीक आए थे, थर्ड स्लॉट वाज ऑन द डिफिकल्ट साइड. So this was on the difficult side. These were, you can say, moderate or like comparatively moderate levels. Okay, so like this is what happens कि लेवल जो होता है वो डिफरेंट होते रहता है तीनों स्लॉट्स में, राइट ना. अब बेस्ट कौन सा है ये आप पता नहीं लगा सकते. कभी ऐसा हो सकता है फर्स्ट वाला सबसे इजी आ जाए, कभी हो सकता है कि फर्स्ट वाला डिफिकल्ट, मतलब like you never know which is going to be the best slot for that year. Okay, so it's a very great gamble. Okay, so that is the thing here that you need to understand कि अगर आपको सेफ साइड चाहिए तो तीनों आप अटेम्प्ट कर सकते हो. ओके, नाउ अगेन इट विल साउंड दैट इट्स अ मनी मेकिंग थिंग. यस, एवरीवन मेक्स मनी, राइट? इवन यू आर डूइंग एमबीए टू मेक मनी. ठीक है, ये भी सच है कि आपको एमबीए क्यों करना है. मोस्टली आपका एम होगा कि like you want to get good package, right? Why do you go to certain B school? You look at placement stats. So let's accept this fact that everyone wants to make money, right? There is nothing wrong in that. But yes, this I believe is unfair because like you should have normalization at least. ठीक है, आप तीन फॉर्म रखो बट नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द केस इन स्नैप. तो एस्पिरेंट्स फिर मजबूरी में तीनों टेस्ट देते हैं because you never know which test is going to be the one that is going to be on the easy side. Especially quant is the deciding factor because English और reasoning में almost similar score आ जाते हैं. Okay, कट ऑफ यूजुअली देखो कट ऑफ वेरी करते रहती है. Somewhere around it is in the early 40s, somewhere like you get a percentile also, right? You get marks as well as percentile. So whatever is your highest marks, like for example last year my highest marks were 48.75. So at 48.75 the percentile was 99.9782, so 99.98. Now if you look at other years, this year 2023 was easy, right? So I got 52.5 and 52.5 had the percentile of 99.98. So 22 में 23 में easy हो गया था, 22 में काफी difficult था. You can see that 47.75 and I got 99.9939. So that is almost equal to 100%. Maybe I must have got a single digit rank.
So you can see that किसी year 47.75 पे 99.99 आ गई, 52.5 पे आई. So like last year was moderate, 2022 was easy, 23 was difficult. So level vary करते रहता है. You should not be targeting a particular score. Okay, just try to maximize your score in the examination. Okay, now like if you wish to practice for snap, okay, and you want to look for mocks, we have mock test for snap, and these are 20 full length mocks on the latest snap pattern, and we have mixed difficulty level according to snap 21 to 24. So I have written all these exams, and like the kind of questions that you get in snap, so टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो जो टॉपिक स्नैप में पूछे जाते हैं, वी हैव कवर्ड दोस टॉपिक्स. एंड लाइक दिस इज द मोस्ट taken test series for snap. So last year we had over 15,000 students taking snap mocks. Okay, so like this is very close to actual snap. You will find the mix of kind of questions that you get in the snap examination. So if you wish to take our mock test, like you can enroll in the same. So we'll be, there is one free test also available, you can check it out. And in case you are preparing for multiple MBA entrance examinations and want to get mocks for different examinations, and we have a mock bundle which includes mocks for all MBA entrance examinations, 15 mocks for CAT plus 10 sectionals each, 15 mocks for SNAP, NMAT, 20 for SNAP, 5 for ZAT, 10 for CMAT, 20 for CET, 10 for CUET PG, 5 for MyCAT, XGMT, and SRCC GPO. So it's a complete package. Many of the aspirants appear for multiple examinations. So we have created this package which includes all these mocks and based on the latest examination pattern, quite close to the actual exams. Okay. So that is about this. And in case you are preparing for these examinations and are looking for a structured preparation, because a lot of students who are solely focused on these exams, कई बच्चे होते हैं जो कैट नहीं दे रहे होते हैं, ये एग्जाम दे रहे होते हैं, and you want to prepare those exclusive topics and want to prepare in a structured manner, and along with like not only classes, we have practice sheets, doubt resolution, and in that you get all these mock tests also, and mat snap etc. So if you are preparing for these two examinations, you can check our nmat plus snap course also. Okay, so the timing of the examination is like in the afternoon, right? Like I think it is 2 to 3 p.m. So that will be released later. They have the timing is not disclosed yet. So usually the timing is 2 to 3 p.m. or 4 to 5 p.m. So yes, afternoon में ही होता है, morning में I have not encountered this. So typically it is either, last year there were 6 slots. Okay, so last year there were 6 slots. So each day there were 2 slots, 2 to 3 p.m. and 4 to 5 p.m. So each day they had 2 slots. So some people might have got the first slot, second slot. So total 6 slots were there in Snap last year. So this year also you can expect the same. So we have last year we there were 6. Before that there used to be one slot per day. So these are the timings of the examination. Okay, so yeah, two shifts on one particular day. So the exam dates this year are 6th December and 14th December and 20th, 6, 14 and 20. Okay, so the dates are 6, 14 and 20. Right, this is a Saturday, Sunday and Saturday. So on weekends you have these exams. So there will be 2 slots ideally like last year, 2 to 3 p.m. and another 4 to 5 p.m. Okay, so this is about this examination. We'll be shortly creating video on the uh, the syllabus, the topics which are asked in these examinations. And in case you are a repeater for these examination and have scored decently in this exam, so we can offer you discount on our courses. So please share your scorecard with us at support@mbakaro.in to avail the discount on our course. So you can get 30% off if you scored 230 plus in NMAT or 97 plus percentile in SNAP. And same goes for NMAT 220 plus or SNAP 95 plus percentile. You can avail 20% off on our
ongoing NMAT plus SNAP course. Okay, so this is a highly focused course only for these examinations. So in case you are preparing for the exams and want to prepare in a structured manner, you can check this out. So the notification is out, and as I said that this is one of the examinations which is easier in terms of difficulty, but difficult in terms of competition, right? So if you are serious about this examination, start preparing from for it right now itself, because after CAT you will not have much time. देखो एटलीस्ट क्वांट तो आपका कैट की प्रिपरेशन के साथ कवर हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड बी focusing on certain things like grammar, vocab, etc. People often ignore those, like for example idioms and phrases, right? So इन सब के आपको फ्री जो आपका हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना. उसमें आपको इसमें कुछ फ्री पीडीएफ भी मिल जाएंगे, लाइक idioms and phrases. There are several other things which are tested in snap, like spelling mistakes. So there are a long list of topics which are tested. So I'll create a separate video on the syllabus for SNAP, the topics that have been asked across different sections in this examination. So this notification is out. So now you should gear up for these exams, and like all major exams like XAT, CAT, now NMAT and SNAP notifications are also out. Please fill the forms carefully. Right? Don't be in a hurry to fill the form. Except NMAT, NMAT में slot book हो जाते हैं इसलिए. But अगर ये exam दे रहे हो तो be thoughtful while filling the form, and so that you do not make any mistake and you don't have to fill the form again. Okay, so all the best for these examinations. We'll be coming up with more content on these exam revision sessions as well, plus the kind of topics that you need to prepare, so that you can get a guidance that what all is asked in these exams, how it is different from CAT, and what topics you must focus on to ace these exams.